ओके, सब मुझे सुन रहे हैं? कैन यू? जी सर। मेरी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान क्या रहा है ना? लग तो रहा है। इरफान इरफान जरा इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अटेंडेंस का मुझे भेज देना। ठीक है सर। ओके, तो जरा हम शुरू करते हैं। अभी तो सबने ज्वाइन नहीं किया ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ फिर बाद में सर स्क्रीन लेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पता नहीं अब कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। ओके, तो ठीक है सर, मैं लेता हूँ खुद। ओके, तो हम काम करते हैं शुरू। लेट मी स्टार्ट विद हमारा ये है तो तुमने देख लिया होगा ये अपना। अच्छा, दो और हैं, एडमिट करते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की दिस ऑपरेटर नॉर्मल, द डिफरेंशियल ऑफ द सरफेस नॉर्मल, differential of the surface normal at, of course we evaluated at a point p कर लो या dn at, अगर हम इसके पैरामीटर वैल्यूज देखें, it is a linear operator because it can be given by anything that can be given by a matrix multiplied by du dv some numbers is a linear operator, is a linear operator। तुमने किया है ना अलजेब्रा में? अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस में तुमने किया है कि एवरी मैट्रिक्स linear operator है। DU and DV are some column vector। क्या सुन जुए? क्या मिक्स? क्या क्यों बात क्यों? कुछ बताइए उसको। ये कौन खाना खा रहा है? मैंने नहीं खाया अभी। आरिफ अपना ये म्यूट करो यार। कहीं से आ रही है वो खाना खाने की बातें, मुझे भी भूख लगेगी ना। ओके, जो भी है। हाँ, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सर से, आप लीजिए। हाँ, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन सर। क्या विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। उसका क्या है? सर स्क्रीनशॉट बोल रहे थे ना आप लैपटॉप पे। अब वही करेगा, रहने दो। ओके सर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, since it is given by a matrix multiplication on a number and you get a pair of numbers, जो कि मैंने लास्ट टाइम किया था, and I believe तुमने किया होगा वेक्टर स्पेसेस जब तुम्हें पढ़े होंगे ना। if you fix a basis, अगर आप एक बेसिस को फिक्स करते हो, of course order would be important in this case, then any linear operator t from Rn to Rm can be is equivalent to multiplication by a matrix of order m cross n। इतना तुमने किया है? Yes sir। Very good। So since it was a 2 cross 2 matrix, अब मुझे उसके numbers नहीं पता, but you know last lecture में हमने किया था। So dn is actually a linear map from R2 to R2 क्योंकि we got a 2 cross 2 matrix। A linear operator, linear operator का मतलब क्या होता है? T of x plus y, where x and y are vectors, is equal to t of x plus t of y, right? And T of alpha times some repeat। T of alpha times x is equal to alpha times t of alpha times T of x। Good। So this is the definition of the linear operator। उसका मतलब ये हुआ कि t dn, अब मैं यहाँ u v नीचे नहीं लिखूंगा, it is understood we are evaluating it at a point। ठीक है? ठीक है? So if I have two vectors w1 plus w2, this should be equal to
dn, which is actually a matrix multiplication at W1 plus dn at W2. Similarly, dn at alpha W1, yeah, whatever, is equal to alpha times dn at W1, where of course W1, W2 are vectors inside R2 and alpha is a real number. और मैंने कहा था हम ये दिखाना चाहते हैं ये एक सेल्फ एडजॉइंट मैप है. सेल्फ एडजॉइंट मैप का मतलब ये होता है कि dn as a map is the same thing as dn star. और ये तभी होता है अगर ये एक मैट्रिक्स सेल्फ एडजॉइंट तभी होती है कि अगर हम लें डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर से w1 dotted with dn at w2 it is equal to dn W1. dn of W1. dotted with w2, right? W2. हाँ Yes, sir. बिल्कुल. अगर ये है for all w1 w2 belonging to r2, अगर ये हमें मिलता है we say dn is self adjoint, यानी अपने adjoint के बराबर है. ओके, इसके लिए हमने फॉर कन्वीनियंस सेक ये नोटेशन निकाली थी फॉर डॉट प्रोडक्ट w1 comma dn at w2, right, is equal to this dn evaluated at w1 comma w2. इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये ना जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, ठीक है? यू नो दैट यू मस्ट हैव डन इट समवेयर, मुझे लगता है. कोई मेरी बात सुनता है? किया है ना? वेरी Yes, गुड. sir. Yes, sir. ओके, Inner product space में. इनर प्रोडक्ट स्पेस में डेफिनेटली किया होगा. वेरी गुड. So what do I have to show? I have to show the self adjointness. So dn at w1 comma, मैंने सोचा मैं इसको थोड़ा टाइम देता हूँ, is equal to dn applied to w2 which is a linear operator comma w1. But I have to show that this is true for all w1 w2 belonging to r2, which in this case is my tangent plane of the surface. इसका मतलब है tangent plane, TPATS, tangent space है tangent. चलो मैं लिखता हूँ words में, tangent plane at some point P to the surface S. ये है मेरा R2. मतलब plane is always can be, you know, identified with R2. ओके, अगर ये इसमें है तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं if it is true for the basis, if I can show that dn at ru comma rv जो इसकी basis है is equal to dn evaluated at rv. मैंने गलत लिखा. अगर मैं ये दिखा दूं this is equal to ru dotted with dn evaluated rv, अगर मैंने इतना प्रूव कर दिया तो it would imply that it must be true for all w1 w2 belonging to r. अगर मैंने basis elements के लिए इस fact को prove कर दिया तो it must be for all vectors. So let us show, suppose this is true, suppose this is true, that this is true for all ru and rv, मतलब for the basis elements. So then because w1 belongs to our tangent plane, it can be written as alpha ru plus beta rv. And of course, w2 then can be written as this vector. Let me write down it as a vector, but you know that they're vectors even when I don't put the cap on them. Okay, by context. So it would be some gamma times r sub u plus some delta times r sub v, where these alpha, beta, gamma, delta are real numbers. Now let's show that if it is true for bases, then it must be true for these two elements. Now let us do it. So dn, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, dn at w1 because it is linear would be just alpha times dn at r sub u plus beta times dn at r sub v.
And similarly, dn at W2 would be equal to gamma times dn at R sub u plus delta times dn at R at v. अब अगर ये है, so then when I take the dot product of dn at W1 with W2, हाँ ये वेक्टर्स है, मैं लिखना भूल जाता हूँ, but you understand from the context. It would be actually, क्या होगा ये, alpha dn at Ru plus beta dn at Rv comma R sub W2. W2 किसके बराबर है, अल्फा नहीं, W2 is gamma times Ru plus delta times R sub. Now using the linearity of the dot product, this would be, पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा into dn at Ru. मैंने फिर से गलत कर दिया, doesn't matter, हमारे पास रबर है. So using the linearity of the dot product, I can write it as this. The alpha बाहर dn r at u, फिर लिख सकता हूँ मैं gamma r sub u plus beta r sub v plus beta times dn at rv, same thing, gamma r sub u plus delta r sub v. Applying the linearity once again, you will get basically alpha gamma into dn r sub u comma r sub u plus alpha beta dn r sub u r sub v. Similarly, then I have beta फिर gamma bar dn r sub v. Then I have let me beta gamma मैंने बाहर निकाला तो ru plus, of course, then I have beta and delta. I would have dn r sub v r sub v. That is, मुझे लगता है इतना मुझे नहीं करना था. ओके, अब इसको क्या करेंगे, नाउ यू यूज ये जो ये दो नंबर्स आ गए ना, इसमें दो नंबर्स आएंगे. एक तो इस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ जहां आर यू आर बी डिफरेंट है, और यहाँ पे जहां आर यू आर बी डिफरेंट है. मेरे कहने का मतलब है, आई एम अज्यूमिंग दैट डी एन एट आर यू आर वी इज इक्वल टू आर यू इंटू डी एन वी, है ना. तो यहाँ पर अगर मैं ये अप्लाई करूं, आई कैन रिवर्स द प्रोसेस. चलो मैं ये कर ही देता हूँ, आई होप कि नेक्स्ट पेज में मैं इन्हें कंटिन्यू कर सकूं. सो व्हाट डू आई हैव टू शो, ओके, वो पीछे जाते हैं, एक मिनट, काश मैं इसको फिर से वहां लिख पाता. सो अब इसको हम यहाँ, जब मैंने इसको ऐसे लिखा, ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा. सो आई वुड हैव dn applied to W1 comma W2 का इनर प्रोडक्ट बराबर है, पिछला पेज कहाँ गया, हाँ, ओके, इसके बराबर है अल्फा गामा, it was alpha into gamma dn at ru, then I have क्या था, अल्फा बीटा आर यू आर वी, जिसको मैं लिख सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, यूजिंग दिस फैक्ट आर यू डी एन वी. यही तो इसमें प्रॉब्लम है, कहाँ गया, अल्फा बीटा, मैं लिख सकता था इसको, व्हाट वाज दिस, डी एन, सो इट शुड बी आर यू डी एन एट आर वी
then plus what was the thing, ये बार बार मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, beta gamma RU, beta gamma RU, कहाँ गया, beta gamma, what was this? This was Tn at RU RB plus लास्ट वाली टर्म क्या थी? Oh no, इसका कुछ होना चाहिए, कोई ऑप्शन ऐसा, RB बीटा डेल्टा RB बीटा डेल्टा DN एट RB, ठीक है ना। अब सिंपली तुम्हें इवेलुएट करना है इसी तरह से, अगर हम इवेलुएट करें इसी तरह से बिल्कुल, W1 DN एट W2, तो जब तुम उसको इवेलुएट करोगे ना यहाँ पे, इट वुड बी द सेम थिंग एज दिस। एक बार हमने फ्लिप कर दिया ना, तो यू विल गेट द सेम थिंग, यू विल सी दैट यू विल गेट द सेम, नो इशू, ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हो सकता है तुम्हें RB यहाँ मिल जाए, ये यहाँ मिल जाए, बट उससे फर्क, because this is dot product and you know that A dot B is equal to B dot A, जब तुम इसको इवेलुएट करोगे you will show that they are equal। so कहने का मतलब ये है कि अगर, कहने का मतलब ये है जो हमने पहले पेज पे किया, कहने का मतलब ये कि अगर ये बेसिस एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, then it must be true for all the vectors, this self adjoint property। so ये सेटल करने के बाद, so we just have to show, what do we have to show now? We just have to show that Dn at some point P evaluated at RU comma R sub V is equal to RU। look, this it is sufficient to prove, मतलब हमारे पास ये काफी है अगर हम ये दिखा दें, it is sufficient to prove that this is RU DNP at R। Good, तो इतना हो गया। तो अगर हमें ये अब दिखाना है, we first show that now for the proof of this we need a lemma। for the proof of this we need the lemma, और हमारा जो लेमा है वो ये कहता है, इस प्रूफ के लिए जो हमें लेमा चाहिए, कहाँ गया वो, ओके लेट मी डू इट। लेमा ये है कि if I take DNP evaluated at RU is nothing but NU evaluated at P, and DNP at RV is nothing but N sub V evaluated at P। तो अगर हमने ये लेमा प्रूव किया तो देन इट इज ऑलमोस्ट डन। तो इस लेमा के लिए मुझे ये दो इक्वेशंस दिखानी है, तो उसके लिए मैं अपनी सरफेस पे वापस जाता हूँ। आई टेक दिस पॉइंट P, है ना, उसका नाम जहां पे मैं इवैल्यूएट सारा करना चाहता हूँ, आई टेक दिस पॉइंट P एंड आई टेक ए कर्व हियर एट दिस पॉइंट P, सो दैट इसको मैं इस तरह से करूंगा कि ये जो कर्व है जिसका नाम मैं अल्फा दूंगा, अल्फा मेरी कर्व है, so it lies on this surface such that alpha शुरू होती है, it is equal to P, and इसकी जो डायरेक्शन है at this point, this is the same as the direction of R। well, you know that हमारी जो surface है उस पे पैरामेट्रिक कर्व्स है, और अगर ये पैरामेट्रिक कर्व यहाँ पे मतलब है, which means V is equal to constant, that means U curve, इसकी जो tangential direction है वो होती है R sub U। अब मैंने कर्व ऐसी ली कि शुरुआत में मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूँ कि शुरू उसका P पॉइंट से हो, और उस शुरुआत पे जो उसका जो टेंजेंट है और इसका जो टेंजेंट है पैरामीट्रिक कर्व का वो सेम है। मैंने कहने का मतलब है अगर ये पैरामीट्रिक कर्व ऐसे है तो इसी के साथ मैंने एक दूसरी कर्व ली, मतलब सो दैट इस पॉइंट पे दोनों का टेंजेंट है RU। अब कर्व का टेंजेंट जो है एट दिस पॉइंट 0, मतलब पैरामीटर वैल्यू 0, वो सेम है एज द वेक्टर RU। एंड वंस वी डू दैट तो हमारा प्रूफ आ जाएगा। सो लेट मी राइट इट डाउन।
कहाँ गया? So we write it down. Let alpha at t be a curve on the surface S, जिसकी इक्वेशन है मतलब या सरफेस ऐसे लिखते हैं R is equal to R at U V such that मैं ऐसी कर्व डाल सकता हूँ such that it starts at such that alpha at 0 is exactly my point P and alpha dash at 0 is equal to R sub U. Okay. Now this curve lies on a surface. ये जो alpha at t है, it has some parameter. अब शुरुआत में इसकी value ये है, but it is a curve on this surface. So it must satisfy also the equation of the surface because it lies on the surface. So alpha at t must be of the form, of course, R at ut vt. It must also satisfy the equation of the surface, which means this thing. So it means that d alpha by dt by chain rule should be equal to R sub u, right? R sub u. Sir. Yeah. CS को class sajamos. Huh? CIS sajamos the class को number class के पाला. Sajamos. Bu. R sub u क्या करूं? du by dt plus R sub v dv by dt. और जो कि मुझे पता है is equal to at t equal to 0. So I can say अगर ऐसा है तो इसका मतलब I can write alpha, let me write alpha dash t is equal to R sub u into u dash at t plus R sub v into v dash at t, which means that at t equal to 0, क्या हो रहा है? I have got alpha at t equal to 0. Alpha at 0 would be equal to R sub u, which means that can only be possible if u dash t then must be equal to 1 and v dash t must be equal to 0 under these conditions. अब ये करने के बाद वंस हमने ये नोट कर लिया कि देन अंडर अगर इस पॉइंट पे मैं इसको इस तरह से कर्व चूज कर सकता हूं सच दैट एट पॉइंट पी ओ मैंने गलत लिख दिया, इट शुड बी एट 0, लेकिन मैंने लिखा एट टी इक्वल टू 0 तो वो भी चलेगा, लेकिन बात एक ही है, वरना मैं यहां लिख सकता हूं एट टी इक्वल टू 0. सो आई कैन हैव, चलो u dash at 0 is equal to 1 and v dash at 0 is equal to 0 under these conditions. Now let's now look at this thing. Now I want to evaluate the normal at this point. Now dnp evaluated at this alpha dash at 0, right, is actually, let me write it as this is basically dnp, let me write it here, dnp evaluated at ru must be equal to this thing. Now चलो मैं ठीक से लिखता हूँ, dnp at r at u is actually equal to dnp at alpha dash at 0, है ना? Because ru is equal to alpha dash at 0, and I just have to remember that u dash at 0 is equal to 1 and v dash at 0 is equal to 0. Now look at this dnp. Now what does that mean? dnp applied to alpha at 0 would be or applied to say in general alpha dash at t is actually equal to dnp
applied to R sub u dash at t, R sub v dash at t. Because this is my basis element, I can think of it as dnp evaluated at u dash t v dash t. क्योंकि basis is obvious, मतलब basically यहाँ प्लस होना चाहिए, सॉरी क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट है, इट इज एक्चुअली अल्फा डैश टी की ये डेफिनेशन है, मतलब नथिंग न्यू, बट आई कैन राइट इट एज इट मीन्स बेसिकली दैट इट इज लाइक दिस, क्योंकि बेसिस एलिमेंट ये है, तो बेसिस को जब कंफ्यूजन ना हो बेसिस क्या है, देन आई कैन राइट इट एज एन ऑर्डर्ड पेयर which is nothing but in the matrix form, अगर मैं इसको as a matrix form लूं, because it's actually a 2x2 matrix जैसा कि मैंने last time किया था, it is just n sub u at p of course, comma मतलब nth comma नहीं, matrix into u dash t v dash t, और मेरे पास जगह नहीं है, so which is nothing but n sub u dash t plus n sub v dash t. This is my dn evaluated at p. कहाँ गया मेरा पिछला पेज? Yes, what was this? At ru. अब मैं कुछ नहीं करना. We know that at t equal to 0, मतलब I have to evaluate this at t equal to 0. So at t equal to 0, I would have u dash t is equal to 1 and v dash t is equal to 0. So it means therefore dnp evaluated at ru is nothing but n sub u. Or of course we are evaluating everything at a point p, तो मैं लिख सकता हूँ, हालांकि ये लिखते नहीं कभी-कभी ये p. We simply write dn, it is understood, ru is equal to n sub u. इसी तरह से I can prove that dn similarly, using another curve, I can just go on the surface again. This time I take my curve in this. I take my alpha at 0 equal to p, the point जहां से हम start कर रहे हैं, and alpha dash at p 0 में लिख सकता हूँ r sub v, and doing all the process I will get nv. तो once I have done this, मुझे prove क्या करना था? I have to show that dn ru rv is equal to ru comma tn at rv. ये मुझे प्रूव करना है to show that it's self adjoint. लेकिन I have proved this, प्रूव तो हो गया लेमा. So proof of the theorem का मतलब ये होगा कि we have to show this thing, ये जो हमने यहाँ है. So but by lemma it is sufficient to prove, या by lemma इसको मैं लिख सकता हूं, कहाँ गया मेरा लेमा? ओके, by lemma this is equal to ru, है ना, this is equal to nu. So it is sufficient to show that nu comma rv is equal to ru comma nv. It is sufficient to prove this is equal to n sub v. तो हमें ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो वी आर डन, क्योंकि nu इसके बराबर है और nv इसके बराबर है, तो वी वुड हैव नो प्रॉब्लम अगर हमने ये प्रूव कर लिया. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? Now we know that n is orthogonal to both ru and rv. Now we know that n dot
RU is equal to 0 and N dotted with RB is also equal to 0. We already know that because N is the vector which is perpendicular to both RE and RB. तो उसके साथ इसका dot product to 0 है and we have to show this. अब उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है अब basically. What we do, अगर मैं इसका नाम 1 दूं, इसका नाम दूसरा, I differentiate equation 1 partially with respect to v. पहले वाले को with respect to v करेंगे और दूसरी इक्वेशन को with respect to u. ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा तुम्हें आइडिया आ जाए तो so differentiating first with respect to v partially with respect to v and second partially with respect to u. तो हमें मिलेगा, मैं चाहूंगा तुम मतलब with respect to v, पहला वाला क्या था, चलो फिर से करते हैं. We got n ru is equal to 0. You have to remember it actually means n dot ru is equal to 0. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को, इट मींस अगर विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं पहली वाली को, सो इट मींस इट वुड बी nv dot ru, right, plus n dot ruv is equal to 0, है ना. तो जिसको मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब ये है nv, अगर मैं इसको पार्शियली कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू v, ru plus n dotted with ruv, this thing is equal to 0. Similarly सेकंड से मुझे मिलेगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा nu rv plus n dot rvu is equal to 0. अब इससे क्या होगा, I just subtract the two now and remember that since हमारी जो surface है, mixed partial derivatives of first order are equal because it's of class R, मतलब it is twice differentiable, and second order partial derivatives continuous, therefore they must be equal. Mixed partial derivatives must be equal. So इसका मतलब ये कि इसके बराबर है. अगर मैं इसको subtract करूं तो I would get nv comma r sub u, right, is equal to पहला क्या मिलेगा, और let me write it पहले ऐसे, minus nu dot rv is equal to 0, right. एक तो हमें ये मिला, so which means we are done. ये तो हमें प्रूव करना था, right. पिछला पेज कहाँ गया. So we have to show that NURV is equal to RUNV, which is the same thing जैसा कि मैंने बोला था. It means that NV dot RU is equal to RV dot NU because dot product is commutative. So ये करने के बाद we're done. We have shown that DN as an operator is self-adjoint. तो ये हमारा एक काम हो गया. नेक्स्ट जो हमारा है ना, थोड़ा सा ये हायर है, हालांकि हमारा थ्योरम बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा, नो, इफ यू हैव वन सरफेस एंड अनदर सरफेस, सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट सरफेसेस S1 एंड S2. ऑफ कोर्स इसकी कोई इक्वेशन होगी, लेट मी कॉल इट नाउ R1 एट UV, एंड इसकी इक्वेशन होगी सम R2 एट UV. So I have a function, I can define a function from points on this surface to points on this surface. Now what can I say about this function? Can I impose a structure on that? लेकिन surface पे अपना कोई structure है नहीं basically, लेकिन इसकी जो domain है, which is a part of a plane, UV plane जो इसका है ना, UV plane जो यहाँ पे है, इसकी domain, इसमें एक structure है. मैं बताऊंगा क्या मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. So there is a notion of differentiability or smoothness. Differentiability, which is very थोड़ा hi-fi है, लेकिन उतना भी नहीं. Differentiability, you know differentiability of a function f from R to R. ये तो तुमने किया था 12th में,
राइट। फिर हम ये किया आपने ग्रेजुएशन में, राइट, यहां भी किया मेरे साथ, क्या कि नहीं? Then similarly, I can define a differentiability of a function from R2 to R2. मैं इसको extend कर सकता हूँ differentiability of a function from Rn to Rn. मतलब once ये clear हो गया ना, इसमें कुछ नहीं करना, मतलब it's straightforward. We can, with the help of this, define differentiability of a function from R2 to R3, R4 to R3, no issue. राइट लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट है, अब ये R2 नहीं है, एक सरफेस है, टू इसी का टेढ़ा मेढ़ा रूप है ना, एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। क्या मतलब वी से a function f from S1 to S2 is differentiable of course at some point P, यहाँ पर पॉइंट P है ना, तो यहाँ पे वो f of P होगा। तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियबल है अगर ये वाली फंक्शन डिफरेंशियबल हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट होगा ना डोमेन में इधर, which would be of course R1 inverse of, है ना, P, यहाँ पे एक पॉइंट होगा ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, f of P के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इधर एक दो पॉइंट होगा। So I can say if I apply R2 inverse after f which I apply after R1, अगर तुम ये composition देखोगी, this becomes a function from the domain of from R2 to R2. This function, this composition, this is this function. I have applied first R1, then F, then R2 inverse. तो मैं कहां से पहुंचा? R2 से R2. तो अगर ये function, now it is from R2 to R2, मैंने कहा था R2 to R2 differentiability is simple. So अगर ये function, ये composition function is differentiable at R1 inverse of P, ये जो यहाँ पे point है, जो यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, R1 inverse of P, we say F is differentiable at P. Similarly, I would say F inverse is differentiable, और हम कभी-कभी simply कहते हैं smooth. If इसका उल्टा करना होगा, if R1 inverse composition F inverse composition R2 is differentiable. ये जो composition है ना with the surfaces, now which again would be a map from R2 to R2 और R2 to R2 different, मतलब हम इनके दरमियान differentiability को use करते हैं as a definition for differentiability of this function, which is a function from one surface to another surface. So इस तरह से है what we call smoothness of or differentiability of a function from one surface to another surface. So f definition, f as a function from S1 to S2, S1 and S2 are surfaces, is called a diffeomorphism. Is called a diffeomorphism. Diffeomorphism. If f is a bijection, एक तो ये 1 1 on 2 है, and f inverse are both smooth, यानी are both differentiable. Differentiable. So ये बात हमने की, मतलब एक डेफिनेशन हमने की डिफियोमॉर्फिज्म। डिफियोमॉर्फिज्म क्या है? ऐसी फंक्शन जो बाइजेक्शन है 1 1 on 2 है और वो both sides differentiable है। और डिफरेंशियबिलिटी मैंने बता दिया, what do we mean by differentiability of a function from a surface to other